Musaf, how are you beta? अस्सलाम वालेकुम। Assalam beta. Ali Hassan, Rohma, Mariam, how are you? Kinza beta, how are you beta? Fine. Fine. How was Eid? How was the long vacations? Good. Did you guys enjoy yourself? Yes. Okay, let's start beta. I want to just do the last 2 pages of chapter number 2 again, and then we'll start chapter number 3. So please open page number 30 in your book beta. Open page number 30 in your books beta. Please turn your cameras on. Tabeen, Ali Hassan, hurry up, turn your cameras on. Hurry up, beta, hurry up, hurry up. Don't waste time. Ali Hassan, Tabeen. Good, beta. Shabash. Yep. You have your books in front of you, page number 31. All of you, beta, please speak out, beta. Do you have the books in front of you? Yes. Okay. Beta, on page number 30, the figure, look at figure 2.25. I just want to revisit this. And we were saying that we were talking about this chapter. We talked a lot about rivers, beta. Okay? फिर हमने खास तौर पे Indus River, which is the backbone of Pakistan, बेटे जो पूरे flowing through from the north to south, बेटे पूरे पाकिस्तान से flow कर रहा है Indus River, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की थी. तो ये this figure we discussed this on last Wednesday, but we'll also discuss it again. That the figure 2.25 on page number 30 shows that how much water flows through river Indus at Kalabagh. Kalabagh is a point. You all know that there is a lot of controversy कि हम लोग वहाँ पे डैम बिल्ड करना है कि नहीं बिल्ड करना. बहुत अरसे से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमें डैम बिल्ड करना चाहिए, but we have not been able to do that. तो कालाबाग उस पॉइंट पे रिवर इंडस में कितना पानी होता है बेटे? सो मिनिमम जो है, दिस इज द एवरेज फ्रॉम 1956 to 1997, तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स की है. 90 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी है, फ्रॉम 137 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी. ठीक है, एंड देन 2.26 ट्राई टू इस डायग्राम में आपको और एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि दिस इज द वाटर एट इन रिवर इंडस एट कालाबाग in billion of cubic meters. आप आपको क्या शो करे, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? Anybody can explain? Anyone beta, can you try to explain? Tabeen, good morning Tabeen. एक्सप्लेन कर सकते हैं? मरियम, रोमा, किनसा बेटे इस ग्राफ में क्या आपको नजर आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? रोमा बताइए, आप बताइए. Roma, you have raised your hand, beta. You want to tell what is happening in this graph? Musaf, what do you think of this graph, beta? आपको क्या ख्याल है? Flow, the volume of flow of river. लेकिन बेटे ये जो ग्राफ जो ऊपर नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब है? अप्रैल में कितना फ्लो है जो रिवर का जो the water in the river in April, how much is it, beta? Okay. 5 cubic meters. And then in May, how much is it, beta? Approximately, roughly बताइए. 10. Okay. June? 20. Between 15 and 20, right? And yes. July? And July? It is 25. Okay. Little so now, what do you think? Why do you think it's increasing from April to July, and then it's going down again in August, September, December, January, February, March में बिल्कुल कम हो जाता है. तो why is it going up in May, June and July? बेटे क्या reason हो सकती है? ताहिर बेटे we are discussing figure 2.26 on page 30. जी रोमा बेटे बताइए. Sir, because in summer the ice is melted and the water increases in level. That's and what else bete? What else happens? Shabash, excellent bete. What else bete? और बताइए और क्या होता है इसके अलावा? And more rainfall.
Very good, very good, excellent bete. So you can clearly see that because since the snow melts on the mountains in these months and starts melting in April, and then it comes, and in May and June there's more and more snow melts, so there's more and more water flow from the mountains. Plus there is a lot of rain, so the water, the volume of the water in the river increases bete. And then you can imagine bete ki winters mein obviously after September we don't have too much rains, और स्नो भी नहीं होती, उसके स्नो शुरू हो जाती है तो मेल्ट नहीं होती माउंटेन्स पे, तो वो मेल्ट नहीं होती तो वो पानी रिवर में नहीं आता. तो यू कैन सी कि क्लियरली इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च द वॉल्यूम ऑफ द वाटर गोज डाउन बेटा. ठीक है, इज इट क्लियर बेटे? अच्छा ठीक है. अब हमारे पास इसका क्या प्रॉब्लम होता है बेटे? If we have water in summer and we don't have water in the winter bete, that means you're not paying attention beta. If you have water in summer and we don't have water in winters beta, so what do you think that's how is this going to impact beta? जो crops, जो winter crops हैं बेटे, उनके लिए हमारे पास रबी crops, जो winter crops हैं बेटे, उनके लिए हमारे पास पानी नहीं होगा, because we don't have water in the river, so we will not have enough water for those crops. So what do we do for that बेटे? हमने क्या किया था, उसके लिए क्या डिस्कस किया था बताइए. अगर हमारे पास समर में ये पानी है, विंटर में लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, तो हमने क्या डिस्कस किया था बेटे? 2 weeks ago when we had the class, हम इस पानी को विंटर के लिए कैसे स्टोर करेंगे बेटे? जी रोमा बताइए. रोमा बताइए बेटे. एनीबडी बेटे? अगर मुसर बेटे, ताहिर, आपको सब, अली हसन, टर्न योर कैमरा ऑन बेटे. अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास बेटे. टर्न योर कैमरा ऑन, हरी अप. बताइए क्या करेंगे बेटे अगर हमारे पास वी हैव ऑल दिस वाटर इन समर? अली हसन, अगर आपने कैमरा ऑफ किया बेटे, फिर मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा. जी बताइए. मुझसे बताइए कि अगर हमारे पास समर में ये पानी है तो विंटर में हम लोग क्या, और विंटर में नहीं है तो हम विंटर में क्या करेंगे बेटा? ताबीन बताएं बेटे. हम इस पानी को स्टोर करेंगे. हाउ विल वी स्टोर दिस वाटर? वी विल स्टोर इट इन द डैम्स बेटे. हम डैम्स में ये वाटर स्टोर करेंगे. That's why we have the Tarbela Dam, the Warsak Dam, the Mangla Dam. We'll store this water in the dam, so we can, when we need it in the summer, fine, we'll use it. But if we need it in the winter, तो जो पानी हमने स्टोर किया होगा हम इसको विंटर में भी यूज कर लेंगे. और डैम जब हम इसको, जो वाटर है उसको इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, what else do we do with that water बेटे? हम उसके लिए और क्या करते हैं उससे? You're all unmuted बेटे, but you're not responding today. You can respond बेटे. Anybody can speak बेटा. The water that we save in the dam, we'll use it for irrigation, for our crops. What else will we do with that water? Electricity. Excellent. We'll produce electricity with that. On this diagram on figure 2.29 on page number 33 bete, that shows you how we produce water, electricity from how do we produce hydel electricity? Hydel power कैसे हम generate करते हैं बेटे? तो ये there's a reservoir से पानी हम pipes के through नीचे गिराते हैं. वहाँ पे turbines हैं, turbines on होती हैं. Page 33 पे आपकी ये diagram है, और उससे फिर ये water से electricity produce होती है बेटे. And this water, once the electricity is produced बेटे, you think this water is wasted or we can use it again बेटे? जो जिस water से electricity produce हो रही है, ये waste हो जाता है या हम इसको दोबारा use कर सकते हैं बेटा? अली हसन, हम इसको यूज कर सकते हैं दोबारा, ये वेस्ट हो जाएगा? मुस्तफ आप बताइए. मुजम्मिल, टर्न योर कैमरा ऑन बेटे. हरी अप. ताहिर, टर्न योर कैमरा ऑन बेटे. यू कांट स्टे इन द क्लास विदाउट द कैमरा बेटे. टर्न योर कैमरा ऑन. मरियम आप बताएं बेटे. मरियम एंड किंजा बेटे, यू हैव नॉट रिस्पोंडेड. दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इफ व्हाट विल वी कॉल दिस? we'll call the hydel power, हम इसको renewable electricity कहेंगे. हम इसको renewable energy कहेंगे because we are not wasting water बेटे. We are not wasting water. This is called renewable. और the other forms of electricity generation है बेटे, जो हम जो power plant में बनाते हैं, जिसमें हम we use coal, oil and gas, and that is used and we cannot use it again. Those, that is called non-renewable. This water that we use for generating electricity, Tabeen, you're not paying attention बेटे. This water that we use for generating electricity, इस water को if it flows down और आगे जाके उस डैम से आगे कोई और हम डैम बना लेते हैं या कोई और पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है बेटे, तो हम वहाँ पे इसी पानी से हम आगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. So this is, what is it? This is renewable form of energy as compared to other forms. So
इज रिन्यूएबल गुड या नॉन रिन्यूएबल? कौन सी अच्छी है बेटे एनर्जी, कौन सी बेहतर है? Renewable. रिन्यूएबल बेटे, बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज, उसी रिसोर्स को हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो दैट इज रिन्यूएबल बेटे. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू बेटे? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटे? Yes. ठीक है, लास्ट पेज बेटे on page 34, it is explaining to you the Indus River system and hydroelectric power. We know that we've read in detail about our Indus River. We read about the use of Indus River, कैसे हमने उस पे बैराजेस बनाए हैं, कैसे हमने उस पे डैम्स बनाए हैं. How is it very important for us बेटे, कैसे उसमें कैनाल्स निकल के हमारी क्रॉप्स को इरिगेट कर रही है. The last page tells you बेटे, in summer, because there is more water and we are releasing water from the dam for producing electricity, तो in summer में हमारे पास electricity ज़्यादा होती है और हमारे पास पानी ज़्यादा होता है. लेकिन winters में जब हम पानी कम रिलीज करते हैं डैम से, तो हमारे पास electricity कम प्रोड्यूस होती है as compared to summers बेटे. Currently पाकिस्तान में जो ये तीनों डैम्स हैं, तरबेला, मंगला एंड वार्सिक डैम्स, they are generating 45% of Pakistan's electricity supply. How much? 45% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो इन रिसोर्सेज से आ रही है. बाकी जो हम लोग फिर न्यूक्लियर पावर से या उससे जनरेट करते हैं, पावर प्लांट से, जो कि कोल, गैस या उस पे चलते हैं, फ्यूल पे चलते हैं बेटे. ठीक है, 45% हमारी इलेक्ट्रिसिटी ये कर रहे हैं. लेकिन विंटर में जब पानी कम होता है तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, तो उस वजह से फिर विंटर में हमारे पास पावर कम हो जाती है बेटे. ठीक है, any questions? So then we can go to the next, start the next chapter बेटे. Any question, anyone? Nobody? Okay. Chalo. Let's go on to the next chapter beta. This is chapter number 3. It is more about industry beta. There are 3 kinds of industry beta. On page 35 you can see the diagram on page number 35 beta. There are 3 kinds of industries beta. ठीक है, सबको नजर आ रहा है diagram beta? First of all, there is an industry of, first industry is called the primary industry beta. Primary industry, the exact industry जहाँ से आप जो raw material है, exact raw material extract कर रहे हैं बेटे, ले रहे हैं. जिससे for instance farming है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है. माइनिंग में क्या होता है, आप मिनरल जो है जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. फिशिंग, ऑब्वियसली यू ऑल नो व्हाट फिशिंग इज. फॉरेस्ट्री मींस यू आर कटिंग डाउन द ट्रीज. तो जो फर्स्ट सोर्स है जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उस सोर्स से आप मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं. दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, फार्मिंग आप कुछ चीज ग्रो कर रहे हैं, तो आपने for instance आपने केचप बना ली. if you make ketchup with that tomato, then what will that become? That will become secondary industry, because जो केचप वाली इंडस्ट्री है वो tomatoes grow नहीं कर रही. it is not growing tomato, it is getting tomatoes as the raw material from the primary industry, and it is then converting that into a product that the consumers can use. So those are manufactured goods. जहाँ पे goods manufacture हो रहे हैं, these are called secondary industries. So secondary industry example, the books give examples. Iron and steel, the industry that makes iron and steel from the minerals that we extract from the earth. उससे जब आयरन स्टील बनाते हैं, या हम कॉटन से अगर हम कॉटन ग्रो करते हैं, दिस इज प्राइमरी. लेकिन उस कॉटन को कन्वर्ट करके हम टेक्सटाइल बनाते हैं, कोई क्लॉथ बनाते हैं, that will become secondary industry. ठीक है, फर्टिलाइजर है, शूज है, लेट्स वी मेक शूज विद लेदर बेटे. ठीक है, तो हम हमें लेदर, वी गेट लेदर्स फ्रॉम काउज मोस्टली, और उस लेदर से हम कन्वर्ट देम इनटू शूज, सो दिस बिकम सेकेंडरी इंडस्ट्री. There other examples in your book. There's sugar है बेटे. Sugar, how do we make sugar? We make sugar from sugar cane. So when we grow sugar cane, that is a primary industry, but when we convert that sugar cane into sugar, that becomes a secondary industry बेटे. ठीक है, और फिर तीसरी बेटे जो इंडस्ट्री होती है, दिस इज टर्शियरी. TERTIARY, टर्शियरी इंडस्ट्री, that is services. These are industry that is mostly that is providing services. For instance, banking with the transport, ठीक है, डिफेंस, कम्युनिटी सर्विसेज. ठीक है, ये जो सारी सर्विसेज हैं, these are tertiary services. अब ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आपने we give you an example of sugar cane. You have grown sugar cane, primary industry. वो शुगर केन को आपने शुगर में कन्वर्ट किया, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. अब वंस यू हैव दैट शुगर इन द फैक्ट्री, उसको आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? हाउ विल यू ट्रांसपोर्ट दैट? यू विल नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटे. तो दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज द टर्शियरी इंडस्ट्री. वो थर्ड सेक्टर है जो ट्रांसपोर्टेशन का, वो टर्शियरी है. बैंकिंग है,
आपने all the schools, all the banks, all the factories, they need a bank to do their transaction, to deposit their money, to pay their salaries बेटे. तो banks उनको जो services provide कर रहे हैं, that is tertiary industry बेटे. ठीक है, सब conference, do you understand the difference बेटे? Primary industry, secondary industry, tertiary industry. All of you first सब बताइए. You understand this? This is now chapter number 3 बेटे. We've started chapter number 3. सबको ये समझ आ गया बेटे? Then I'll move forward बेटा. रोहमा, मरियम, किंजा बेटे, अली हसन की बात समझ आई है आपको? ताबीन, मुजम्मिल, शाबाश, गुड. चले, और गो टू पेज नंबर 36. मरियम और किंजा, यू वांट टू रीड बेटा पेज नंबर 36? हु वांट्स टू रीड? मरियम और किंजा बेटा. मरियम, किंजा बेटा, यू वांट टू रीड पेज नंबर 36? किंजा, आपने पढ़ना है बेटे? Yes. ओके बेटे, रीड पेज नंबर 36 बेटे. Do you remember learning in book 1 that plantations recurring किंजा बेटा 35 तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. पेज 36 बेटा, नेक्स्ट पेज. किंजा बेटा पेज 36, नेक्स्ट पेज बेटा. primary and secondary industries may be large, medium or small scale. Iron and steel, oil refining, fertilizers and cement are some of the large scale industries in Pakistan. Make in large, medium and small scale. Whatever the scale of primary or secondary industries have the same industrial system. All industries have inputs, process and outputs. Tertiary industries, tourism may also. Kinsa beta, you're having connection problem. Anyone else? Mariam, do you want to read beta? Mariam, do you want to read now? Musab, you want to read beta? Okay, read the second paragraph beta. Whatever the scale of a primary or secondary industry, all these industries have the same industrial system. That is, all industries have inputs, processes, and outputs. Tertiary industries, for example, tourism, may also be of different scales, but they do not have the same industrial system since their outputs are services to customers. It is important for service industries to ensure that their customers are satisfied with the service provided. Good management is a very important factor in ensuring this. Okay, so they're saying that the three industries that we've discussed, they can be large scale, small scale, and medium beta. What do you think about fertilizer and cement beta? ये आपका क्या ख्याल है? ये small industries होंगी या large industries होंगी जहाँ पे fertilizer बन रहा है, cement बन रहा है, iron और steel बन रही है बेटे? What do you think? ये large industries होंगी? Okay, okay. Can you think of a small scale, any small or medium in industry beta? Anyone? Can you think of any medium or small industry beta? ये कॉटेज इंडस्ट्री होती है घरों में बैठे, जब आप इसमें सिर्फ एक दो लोग मिलकर कुछ चीज बना रहे होते हैं, that can be called a very small industry बेटे, right? Any industry that is making something very in a small quantity बेटे, वो small industry है. But fertilizer, cement, iron and steel, all these industries that makes all of these things बेटे, these are large industries बेटे. ठीक है? Irrespective of the fact that it is large, small or medium, but they have the same industrial system, that is they have the same inputs, processes and outputs बेटे. हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई इनपुट होगा, obviously कोई रॉ मटेरियल होगा, फिर आप उसको प्रोसेस होगा जिसको उसको रॉ मटेरियल को आप you will work on that raw material, and then there is going to be output means आपकी product जो आप उसमें produce करेंगे. ठीक है? So you know, okay, understand that there can be the three kinds of industries can be of different sizes, small, large or
medium bete. Look at figure 3.2 on page number 36 bete. This is the percentage or contribution of the industries to the economy. To GDP means gross domestic product होती है कि पूरे पाकिस्तान की कितनी इकोनॉमी है, कितनी कितनी है पूरे पाकिस्तान की एक साल की प्रोडक्शन कितनी है बेटे. तो आप प्राइमरी सेकेंडरी से देखें, जो टर्शियरी इंडस्ट्री है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इनको, वो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी से उसकी जो है ना ज्यादा है, प्राइमरी सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी की जो कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी ज्यादा. तो यू विल बी सरप्राइज कि ये अगर आज यू गो बैक 100 years 200 years ऐसा नहीं होगा. उसमें प्राइमरी ज्यादा होगी, सेकेंडरी सबसे ज्यादा प्राइमरी होगी, फिर सेकेंडरी होगी, टर्शियरी बहुत कम होगी. लेकिन नाउ यू सी दैट कि टर्शियरी का रोल बढ़ता जा रहा है. टर्शियरी मींस बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, even a school is a tertiary service. The education that we're providing you, that is a tertiary service, because we're not producing anything, we're not manufacturing anything with it. Okay, so this is, we are providing a service. This is a tertiary service. So these are increasing. The tertiary sector is increasing with it. Okay, who want Tabin? You want to read now? Tabin, you want to read? Tabin, you want to read, bete? Muzammil, you want to read, bete? Muzammil? Muzammil, beta, you want to read? Ali Hassan, you, bete? Ali Hassan? Mariam, you want to read, beta? Mariam? Mariam, beta, you want to read? Sir, from where? Page number 36, the second right side, beta. Factors that may influence the development of an industry, beta. Factors that may influence the development of an industry. The machinery in factories on plantations runs on electricity. We learned in chapter 2 about HEP. HEP beta is hydroelectric power. Hydroelectric power means the power that is generated from water. It is HEP, hydroelectric power beta. Ji beta. Over 50% of Pakistan's electricity is generated in thermal power stations, i.e. power stations that burn coal, oil or gas to help to generate the electricity. Water is also necessary to generate electricity in these power stations, but the diagram figure 3.3 shows that a fuel also has to be burned and that the power station has a chimney. The burning fuel has to heat the water enough to make the water turn into steam. Why doesn't an HEP station also have a chimney? Okay, so you look at the diagram on page number 36, bete, the diagram at the bottom of the page. Notice the diagram that, bete, first of all, there is water. देखिए सबको नजर आ रहा है diagram, bete. Notice the diagram on page number 36, bete. There's water, bete. You need water. You heat up the water. That water produces a steam. उस steam से बेटे वो turbines on होती हैं और turbines से generator on होता है जो कि electricity produce करता है बेटे. ठीक है? तो you're burning a fuel. This is not now hydroelectricity बेटे. ठीक है? This is not hydroelectricity. This is an electricity generated in a power station बेटे. अब जो फ्यूल आपने बर्न करना है तो वाटर को हीट अप करने के लिए, उससे स्टीम बनेगी, उससे आपका बाकी काम होगा. तो जब आप फ्यूल बर्न करेंगे तो आपको ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी पोल्यूशन बेटे, देयर इज गोइंग टू बी धुआं होगा बेटे, जो कि उसमें से आपकी फैक्ट्री में से निकलेगा, जो आपको नजर आ रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है बेटे. तो द बुक इज आस्किंग यू कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में चिमनी क्यों नहीं होती बेटे. यहाँ पे तो चिमनी आपको नजर आ रही है ना, जिससे आपका ये जो 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 गैसेस है बाहर निकल रही हैं. जहाँ पे हाइडल इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वहां पे आपको चिमनी क्यों नहीं होगी. कौन बताएगा मुझे कि द बुक इज आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. वी डोंट हैव अ चिमनी इन हाइडल इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई डोंट वी हैव अ चिमनी देयर बेटा.
एनीबडी कौन बताएगा मुझे कि वहां पे चिमनी क्यों नहीं होगी? एनीबडी टेक अ गेस बेटे. Sir, because there is evaporation. बेटे Issue. बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी फ्यूल. हाइडल इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कोई फ्यूल यूज ही नहीं कर रहे. हम तो सिर्फ पानी को प्रेशर से नीचे गिरा रहे हैं एंड वी आर जनरेटिंग रिटर्निंग ऑन द टर्बाइन बिकॉज ऑफ दैट एंड वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो हम वहां पे कोई फ्यूल यूज नहीं कर रहे. जहाँ पे फ्यूल यूज करेंगे तो वहां पे धुआं निकलेगा और उसको हमें सिस्टम से निकालने के लिए हमें चिमनी यूज करनी पड़ेगी. लेकिन हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है जो हम पानी से जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी फ्यूल यूज नहीं कर रहा है. फ्यूल यूज नहीं कर रहे तो वहां पे धुआं प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हमें चिमनी की जरूरत नहीं है बेटे. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस नाउ बेटे? तो अब ये फैक्टर्स बेटे, अब जो इंडस्ट्री है उसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज वन फैक्टर बेटे. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, you think will we be able to run the industry? No bete. So electricity is an extremely important component. जो power है is an extremely important component अगर हमें electricity generate करनी है बेटे. ठीक है. अच्छा, now look at figure 3.4 on page 37. All of you bete, look at figure 3.4 on page 37. This shows you all the factors that you need to run an industry bete. You need capital, which is money. You need money first of all to buy machinery, to buy a place where you set up the industry. You need raw material. They've shown you cotton bit. So if you want to produce cloth, obviously you need some kind of raw material for producing cloth, and the cloth, one of the raw material is cotton bit. You need labor. You need people who work for you in the industry. You need water and power supplies bit. Right? You need water and power supplies. आपके पास electricity नहीं होगी तो आप कैसे industry run करेंगे? And then there are government policies bit. Sometimes the government increases the tax on your industry, sometimes it decreases the tax बेटे. जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है. जब गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज करती है तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है बेटे. देन देयर मार्केट, वेयर डू यू सेल योर प्रोडक्ट. मार्केट्स मींस वेयर डू यू सेल योर प्रोडक्ट्स. इट्स गुड दैट यू मेक ऑल दिस थिंग्स, बट वेयर डू यू सेल दोस प्रोडक्ट्स बेटे. ठीक है, आप कहाँ पे उसको सेल करेंगे? तो आपके पास अगर मार्केट नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू there's no point making anything if you're not able to sell that product. With management means who is running the industry. Do you have a good management? You don't have a good management. If you don't have good managers, you don't have good administration department, you will not be able to run the industry effectively or efficiently. So you need a good management. And then political stability means if there is war, if there is unrest, if there is any other problem, तो आपकी industry disturb होगी. अगर आपकी political stability नहीं होगी तो आपकी industry disturb रहेगी. And lastly, you need transport and communication. You need transport and communication. Whatever you make बेटे, आपको transportation होगी तो आप इसको transport करके ले जाएंगे ना आप अपने जहां तक भी आपने मार्केट से पहुंचाना है. If you don't have transport, how will you be able to take your product to the market? How will you able to reach people who are going to use your product बेटे? ठीक है, तो ये सारे factors हैं that influence secondary industry बेटे. Primary industry में नहीं है, ये secondary industry में ये सारे factors हैं. अगर ये इनमें से कोई भी होगा तो वो इसको इम्पैक्ट करेगा बेटे. ठीक है, अली हसन, यू वांट टू रीड नाउ बेटे? अली हसन, anyone else who wants to read better, raise your hand if you want to read better. Mariam, Roma, who wants to read better? Roma, read better. Just read one paragraph, then we'll finish better. Factories that page number 37 better. Page number 37. Okay. Adequate supplies of electricity are essential for the development of industries, but many other factors are also important. These factors are given in figure 3.4.
We studied raw materials and capital in book 1. We learned the meaning of raw materials and capital and why more capital is needed to set up a factory and a plantation than to start a household industry. Not all factors shown in Figure 3.4 are important for the development of every industry. In addition, if the same factor is important for two industries, then it may be much more important for one of the industry than for the other. For example, if there is a threat of war, political instability, then a foreign company which was thinking of expanding its factory may decide not to do so. Even if there is a threat of war, a family-owned workshop, workshop in a city or village able may still be able to take an extra work and expand its business. Some of the factors on the diagram may have big influence of how well a secondary industry continues to perform after it has been developed. For example, Okay, bete. Roma, we'll stop right here, bete. They're saying that the factors, bete, all the factors do not influence the industry in the same way. For instance, they're giving you an example. अगर यहाँ पे वॉर का खतरा है किसी भी कंट्री में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बेटे, तो कोई फॉरेन कंपनी है उसके लिए तो वो तो कभी भी उस वक्त उस कंट्री में नहीं जाएगी इफ दे थिंक देयर इज अ डेंजर ऑफ वॉर और देयर इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो फॉरेन कंपनी तो उस कंट्री में नहीं आएगी. लेकिन if the industry that is already operating in the country, the local industry, they will continue to operate because even if there's a war, they don't have a choice. They have to live in that the country. बेटे तो जो factors हैं, हर फैक्टर हर इंडस्ट्री को एक ही तरह से नहीं करता बेटे. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इट इज बेटे. उसको उसी तरह से वो फैक्टर उसको उसी तरह इंपैक्ट करके जरूरी नहीं है कि हर फैक्टर हर चीज को एक तरह से इंपैक्ट करे बेटे. ठीक है, we'll stop right here bete. We'll continue with this chapter tomorrow. Let's see how far we can get bete. If both of you, if you have any question bete, please ask me right now, then we'll end the class right now. No question? Rohma and Kinza, any question beta? Chalo, we'll stop the class right here. We'll continue from here tomorrow beta. And I'll give you the question answer of chapter number 2 beta. You have to do in your copies. Allah Hafiz beta.